Hello. Sir, I'll correct it for you. Hello, all you lovely people. एशिया कप के बाद हम वापस आ चुके हैं because it's 2020 वर्ल्ड कप और 2020 वर्ल्ड कप में ग्रुप 1 हो चुका है खत्म. अब बारी है सुपर 12 की और मेरे साथ रोज आप जुड़ेंगे यहाँ पर क्रिक ट्रैकर में. बैडब्रिक 7 एंड क्रिक ट्रैकर्स प्रेजेंट्स रन की रणनीति. दो स्पेशल गेस्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद है. अफगानिस्तान से असगर अफगान और हमारे साथ है हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पैनल में, फारूक इंजीनियर. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. असगर भाई सलाम अफगानिस्तान से. क्या चल रहा है वहां पर आजकल? वालेकुम सलाम. आजकल तो थोड़ा मौसम ठंड चल रहा है यहाँ पे क्योंकि सबको जबरदस्त है और लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप मैचेस के लिए, स्पेशल अफगानिस्तान के मैचेस के लिए. बिल्कुल. फारूक सर, हाउ आर यू टुडे एंड एक्साइटेड फॉर द सुपर 12 मैचेस नाउ? Absolutely, absolutely. It's wonderful to see countries like Sri Lanka. Well, Sri Lanka were expected after the win in the Asia Cup. But countries like Zimbabwe, Ireland, Netherlands, hats off to Ireland. They knocked off West Indies off their perch. West Indies are one of the fancy teams, and in yesteryears, West Indies were one of the finest teams in world cricket, but they are now out of it. So that's a sad state of affairs for international cricket. But by the same time, well done to ICC to give the opportunity to countries like Zimbabwe, Ireland, and Netherlands to qualify. Fantastic. असगर भाई, आपके लिए कितना बड़ा शौक था वेस्ट इंडीज का बाहर हो जाना 2020 वर्ल्ड कप से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखो, मैं हॉनेस्टली एक बात बता दूं आपको कि जिस तरह ये और टीमें थी, मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे, आयरलैंड, श्रीलंका, हॉलैंड, तो ये एक साथ से उसकी जो कम्बिनेशन मेरी टीम की जो कम्बिनेशन थी, जो ये मैचेस खेल रहे थे, तो मैं क्योंकि हमने काफ़ी मैचेस भी इनके साथ खेले और मैं फॉलो कर रहा था जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम थी. मैं हॉनेस्टली जैसे शुरू में मैंने देखी उस टीम, तो मैं अपने दोस्त से ये बात कर रहा था, मैंने कहा मुश्किल है कि इस टीम में वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई हो जाए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में एक जो सारे प्लेयर तो यंग प्लेयर थे. आप जब भी एक टीम को एकदम यंग करोगे, उसको नए प्लेयर को मौका दोगे, तो इस तरह मुश्किलात के, जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में बहुत प्रेशर का एक टूर्नामेंट होता है. हमने बहुत ज़्यादा क्वालिफाइंग राउंड के लिए, हमें पता है कि क्वालिफाइंग राउंड में कितना प्रेशर टीम पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तो इस तरह टूर्नामेंट आपको चाहिए कि आप अपने सीनियर प्लेयर के साथ जो एक्सपीरियंस होता है, जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप में टीम ना होना ये वर्ल्ड कप के लिए मायूस बात है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो प्लेयर है वो बहुत एंटरटेन होते हैं और वर्ल्ड कप में हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलती है. तो इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप का वो मज़ा भी थोड़ा कम हो गया है वेस्ट इंडीज़ की वजह से. तो फिर मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको फिर भी कि जिस तरह श्रीलंका, जिम्बाब्वे, हॉलैंड, आयरलैंड एक साल से 15 मंथ से जो क्रिकेट के लिए जो कम्बिनेशन बना था, तो इन लोगों का हक बनता था कि ये क्वालिफाई हो जाए. Farooq sir, T20 cricket is also about entertainment and West Indies not in, no more there in the 2020 World Cup. They are big time entertainers. How much will you miss them and what went wrong for them? Well, big time. West Indies have been one of the most popular sides. They played very attractive cricket. So they will be missed big time. I can't imagine a world competition without the West Indies because the West Indies were part and parcel. In my time, they're the fastest bowlers in the world. They bowled over 100 miles per hour, but there were no speed guns to record. People like Wes Hall, Charlie Griffith, Garfield Sobers, and all that. But cricket is poorer without the West Indies. Let's hope they come back again. I'm sure they will come back again. I think there were some faults with the team selection, not availability of certain players. They've got some fabulous players still who are ideal for T20. And they should be in the 2020 competition. But somehow, I think the selection process, then maybe
politics in their country. I don't know cricketing politics. I'm far away from that. Clive Lloyd is one of my best friends. He was my roommate for Lancashire for 10 years. So I used to know, we used to talk a lot about international cricket, West Indies cricket. And he used to always tell me how it is degenerating after he left, because he was the last most successful captain of the West Indies. Yes. But for teams like Zimbabwe, Ireland, Netherlands, just to qualify, it's like for them winning the World Cup. Because it's a great, as Asghar has very, very rightly said, that Afghanistan qualified all these years. It was sheer hard work and determination and a will to succeed that brought Afghanistan to the cricket there is. I have always been a great supporter of Afghanistan cricket, of Afghan cricketers. Rashid, Nabi, I've seen them in the IPL. I was the very first match referee for the IPL. So that I've come to know them well. They're such wonderful people and such wonderful cricketers. So the whole world wants to see Afghanistan succeed. And I, for one, and I'm sure every Indian is behind me there, to wish Afghanistan cricket all the very best. बिल्कुल. और असगर भाई, वेस्ट इंडीज तो चलिए बाहर हो गया, लेकिन श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, कितना अच्छा क्रिकेट इन्होंने, कितना बढ़िया क्रिकेट क्वालिफायर्स में खेला, और इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुपर 12 में? देखो, मैंने पहले भी एक बात बोली कि जो क्वालिफाइंग राउंड होता है वो बहुत प्रेशर का होता है. तो मेरे ख्याल में अब ये टीम जो क्वालिफाई हुए वर्ल्ड कप के लिए, जो मेन राउंड है, तो उसमें इतना प्रेशर इन लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड कप में है. तो मेरे ख्याल में जिस तरह श्रीलंका ने क्रिकेट के लिए, जिस तरह जिम्बाब्वे ने क्रिकेट के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट लोगों के लिए, आयरलैंड ने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, हॉलैंड ने किया है. तो मेरे ख्याल में इन टीमों को ईजी नहीं लेना चाहिए वर्ल्ड कप में. ये इस तरह टीमें हमेशा वर्ल्ड कप में, जिस तरह आयरलैंड है, हॉलैंड है, श्रीलंका है, इस तरह हमेशा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बड़ी बड़ी टीमों को लोगों ने मारा है. तो मेरे ख्याल में एक तो ये ज़बरदस्त हुआ कि एक जो टीमें, एक ज़बरदस्त टीमें 12 के 12 12 सारी टीमें ज़बरदस्त बनी है इस वर्ल्ड कप में. मैं जैसे फारूक साहब ने बोला कि वेस्ट इंडीज़ को मिस करेंगे, वेस्ट इंडीज़ को सब मिस करेंगे इस वर्ल्ड कप में, होना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है. मगर ये टीम भी कमज़ोर नहीं है, इन लोगों ने काफ़ी क्रिकेट के लिए, और ये कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या बड़ी टीमों को मात दे, उसको उससे मैच जीते, क्योंकि मैच जीतने से पॉइंट भी आगे हो जाएंगे, आइंदा के लिए इसके लिए अच्छी होगी, और एक्सपीरियंस भी इन लोगों के लिए होगा. तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त टीमें हैं, सब टीमों को टफ टाइम मिलेगा, किसी को भी इन टीमों को ईजी नहीं लेना चाहिए. Yes, you can be sure that one of these teams will definitely cause some upsets, or and they are very capable on their day, given a bit of luck and all that. Zarur maar sakte hai, zarur hara sakte hai. One of the big fancy teams. You never know. T20 cricket mein, the best captains will usually win the competition, because captaincy is such a vital issue, and even if they don't score many runs, the captains, but their captaincy will make a huge difference, because one bad over, giving 15-20 runs, could make all the difference between winning and losing, because the margin is so narrow, so tight in T20 competitions. So, I mean, I wouldn't be at all surprised if either of these lesser-known teams, I hope we don't call them lesser-known teams after this tournament, because they could easily cause some upsets. They are good enough. They're good enough to qualify. They've shown us that they are good enough to beat the West Indies, and so I think it's quite an open competition. There are obvious favorites in this competition. Australia are playing in their own backyard. So, I mean, they've got to be considered as the favorites. Absolutely. आधे घंटे में मैच शुरू होने वाला है, असगर भाई एंड फारूक सर, और आपको मैं पहले हेड टू हेड दिखा देती हूँ. मुकाबला बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मुकाबला जो है एक बड़ी राइवलरी होगा, एक बड़ा रिवेंज होगा, क्योंकि पिछले बार जब आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आए थे, फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और अब एक बार फिर से यहाँ से शुरुआत हो रही है सुपर 12 की. ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैचेस जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस जीते हैं, टोटल 15 मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं.
ऑस्ट्रेलिया में असगर भाई, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा कितना ज्यादा भारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में? देखो, एक बात है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जब भी मैच हुआ है तो मेरे ख्याल में जबरदस्त मैच हुआ है, क्योंकि जिस तरह अब दुनिया में आप देखो कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच, इस तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आपस में एक कंपटीशन है, क्योंकि आपस में बहुत टफ मैचेस होते हैं इन लोगों के। तो मेरे ख्याल में ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया का हमेशा जो पलड़ा न्यूजीलैंड में भारी रहा है, हमेशा उनसे मैचेस जीते, अच्छे मैचेस के साथ खेले, और हारे हुए मैच न्यूजीलैंड से जीते ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल में मैच जबरदस्त होगा। ये दोनों के लिए सेम कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों इस कंडीशन के साथ यूज्ड टू है, तो मैच जबरदस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये कोई भी नहीं बोल सकते कौन मैच जीतेगा, मगर ये कि दोनों टीमें ने काफी मेहनत की है, वर्ल्ड कप से पहले काफी मैचेस खेल चुके हैं, जबरदस्त फॉर्म में दोनों टीमें, और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है दोनों टीमों में। तो मेरे ख्याल में मैच बढ़िया रहेगा इंशाल्लाह। मतलब आपने असगर भाई पहले ही हमें बता दिया कि मैच जो है वो बहुत बराबरी करेगा, प्रिडिक्शन नहीं आप देने वाले कि कौन जो है वो मैच जीतेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो मुकाबला है वो एससीजी में खेला जाएगा। एससीजी का जो ग्राउंड है फारूक सर, बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है, एंड 160 टू 180 के बीच में स्कोर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। राइट डिसीजन फारूक सर, बिकॉज यू वांट टू bowl first and then chase? Well, Australia have won the toss and chosen to bowl first. So, Yes. I mean, the first battle they won, because winning the toss is always a very crucial thing. We must remember New Zealand have not beaten Australia in any form of cricket since 2011. You know, Australia are the reigning champions and have the advantage of playing in their own backyard, so to say. I mean, people like David Warner, you know, is like a volcano. If he erupts, then I mean, a huge thing. But it was so good to see that neither side have declared the teams beforehand, because there was 90% chance of rain. But so good to see that the game is being played and cricket is being played. And in tomorrow's game, India-Pakistan, I only hope and pray it doesn't rain, because Melbourne, you know, the weather is a bit iffy, like Manchester where I live, you know. So, I mean, at the moment, Australia can't advertise Melbourne as a sunshine state. It's a cloudy state at the moment. But cloudy conditions will prefer swing bowling. So New Zealand has some great swing bowlers. So don't write New Zealand off completely. You know, you never know in international cricket, especially in our 2020 cricket. Australia But have certainly the advantage. given the record, New Zealand, given the record, New Zealand has scored 0 wins in any format against Australia in Australia since 2011. With what confidence, with what kind of confidence they'll enter into this match? Well, they've nothing to lose. They have everything to gain. They can't do worse than the previous record. So I think New Zealand are fighters. You know, they're a good side, but they've choked at crucial moments. And this is very important that Kane Williamson sort of lifts his players up. There is no love lost between Australia and New Zealand, I'll tell you that. There's always been that, you know, New Zealand, I've always thought that they're better people than the Australians. The Australians are fighters, absolutely, you know, they're street fighters, so to say. So, I mean, and that element certainly helps you win any form of sports. New Zealand are sort of mild, you know, country full of sheep and all that. So they're mild-mannered, mild-hearted people, different personalities altogether. And the personalities reflect on the cricket field. But Australia won the first battle by winning the toss and choosing to bowl first. Let's see how that comes across. Because असगर भाई, जब आप इतने बड़े मैच में आते हैं, सुपर 12 के, ऑस्ट्रेलिया आपके सामने है, न्यूजीलैंड किस माइंडसेट के साथ आज के मुकाबले में आएगा? क्या पिछले रिकॉर्ड्स मैटर करेंगे या फिर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ टीम यहाँ पर पहुंचेगी? ये कि हर मैच नया मैच होता है। अब ये वर्ल्ड कप है, नया इवेंट है, पिछला वर्ल्ड कप गुजर गया है मेरे ख्याल में, और न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बहुत मैचेस भी खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड का, क्योंकि लास्ट जो वर्ल्ड कप मैचेस हुए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आपस में, स्पेशल जो फाइनल हुआ है, तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और काफ़ी एक्सपीरियंस है दोनों टीमों के एक दूसरे के साथ खेलने में।
तो मेरे ख्याल में अगर न्यूजीलैंड आज बैटिंग करती है, थोड़ा उसको रन बोर्ड पे डालता है, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग हमेशा बहुत डिसिप्लिन रहती है। तो ये कि ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे जो विकेट है जो पीछे आज, वो हमेशा बैटिंग के लिए थोड़ा सूटेबल होती है, वहाँ रन बनते हैं अक्सर, और चेसिंग अक्सर वहाँ पे होती है T20 में स्पेशली। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड आज कोशिश करे कि ऑस्ट्रेलिया पे अटैकिंग क्रिकेट करे, क्योंकि जब भी आप वर्ल्ड कप का पहला मैच है, जब भी आप शुरू में किसी टीम पे अटैक करते हैं और आप अटैकिंग मूड पे आते हैं, तो ऑटोमेटिकली टीम दूसरे जो है थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। मगर मेरे ख्याल में आज न्यूजीलैंड कोशिश करे कि वो ऑस्ट्रेलिया पे अटैकिंग क्रिकेट करे, उस पर पॉजिटिव माइंड के साथ आ जाए। और असगर भाई एक बात और, जब आपके कप्तान जो दोनों है फ्रॉम बोथ द टीम्स अपनी फॉर्म को लेकर काफी ज्यादा जूझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी न्यूजीलैंड के भी, कप्तानों का माइंडसेट क्या होगा? वो किस बिलीफ के साथ आएंगे, या फिर हर मैच जैसे कि आपने कहा कि नया मैच है? बात इस तरह है कि दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स है, दोनों कैप्टन है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। मेरे ख्याल में हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये आउट फॉर्म, ये रन नहीं पर, ये एक इस तरह प्लेयर है कि अगर एक इनिंग्स भी हो जाएगी तो उसको सारा वो पिछला माजी खत्म हो जाता है फिर। तो मेरे ख्याल में ये आप इस पे हमेशा बिलीव कर सकते हो कि ये रन बनाने वाले प्लेयर है। और अगर दोनों प्लेयर ने, जो कप्तान भी, टीम के लिए कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली कप्तान का फॉर्म में आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो दोनों कैप्टन, वो मेन प्लेयर भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दोनों आपस में मेन प्लेयर है दोनों। तो मेरे ख्याल में तो इन लोगों के लिए फॉर्म में आने इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन इसके साथ, ये ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन है, फिर कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। न्यूजीलैंड में काफी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके, मेरे ख्याल में दोनों के लिए ईजी रहेगा अपने आप को फॉर्म लाने में। अगर ये कोई एशिया होता या कोई और कंट्री होती, फिर हम एक बात कर सके कि ये आउट ऑफ फॉर्म है और फॉर्म में नहीं जा रहे। तो मेरे ख्याल में इन लोग दोनों प्लेयर्स को यहाँ फॉर्म आने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। Farooq sir, what about Finn Allen? Have you been following this player, because he's one of the most exciting short format players currently, boasting a power play strike rate of 156.48, the best among all batters who have played at least 10 innings during this phase since his T20 debut in March 2021. Have you been following this player? Are you excited to see him? Yes, indeed. Finn Allen is a tremendous player, really. He's really, I mean, averaging 156, in power play, which is fantastic. He's certainly one of the most exciting players. And for a man like him to keep a man like Martin Guptill out of the thing, Yes. I would say play the man in form. He's the man in form. Martin Guptill has been a fantastic player over the years. But just to keep a man like Martin Guptill out is a huge compliment. They must think the world of him. But he's a very exciting prospect. I've seen him, and just like young Tim David from Australia, from Singapore, they picked him up all of a sudden, and suddenly he's playing for Australia. Harry Brooks for England. So these youngsters have a lot to prove. They've done themselves in IPL and in Big Bash and all over the world in limited over contests. So this is a great showcase for them, the T20 World Cup, to show them well. And Finn Allen certainly will be rubbing his hands to show the world what a great player he is and what a great find he is for New Zealand. Let's talk about the playing 11 now. असगर भाई, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में पहले बात करते हैं। तो एरन फिंच, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा एंड जॉश हेजलवुड. Are you happy with the playing 11, असगर भाई? मेरे ख्याल में जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया ने बनाई, अपने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि मैच जीत जाए, और मेरे ख्याल में जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ऑस्ट्रेलिया। And what about New Zealand, sir, Farooq sir? New Zealand की playing 11 भी आपके सामने है. Are you happy with this playing 11? Yes, I am actually, because Devon Conway is fit, which is a very good sign. Michelle Santner, I'm glad they're playing. I mean, in a thing like this, the batting will be in a rain-affected match, and there must be rain around. So that's why Australia have decided that in case it's a shortened game, they have an advantage. But it's all about shuffling your batting order, and that's what exactly New Zealand will be doing. They'll hope for a good start, because every ball is important in T20 World Cricket.
And in a short game, a captain can dictate what to do with your team. That's why good captaincy will make a huge difference. And both Aaron Finch and Kane Williamson are very, very good captains. So I think we've got a very Devin interesting Conway. prospect. Devin Conway. New Zealand captain this time is Devin Conway, not Kane Devin Williamson. Conway. I'm sorry about that. Yes. But, No. Devin Conway is also approved, a very good captain. His fitness was in doubt, but I'm glad he's fit and he's playing. And he'll be doing his best to play against adversaries, Australia. They've lost the toss, but still they'll be hoping to win the match or give a good account of themselves. असगर भाई अगर आप रिकॉर्ड देखें, इतिहास ये बताता है कि जब भी 2020 वर्ल्ड कप होता है, जो होस्ट होता है वो कभी नहीं जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस बार 2020 वर्ल्ड कप जीतने के कितने चांसेस है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो। ये भी अजीब सी बात है, जो जब होस्ट हुआ है इसने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो मेरे ख्याल में इस बार तो ऑस्ट्रेलिया को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है, काफी उसको कॉन्फिडेंस भी है और ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में भी है। और जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया कॉम्बिनेशन देख रहे हो वो इसी मूड की वो अच्छा क्रिकेट है वर्ल्ड कप में। मगर ये हाँ, इस तरह ये हमेशा हिस्ट्री बनती रहती है। अब तक तो ये हिस्ट्री नहीं बनी है कि जीते, तो ऑस्ट्रेलिया को ये जबरदस्त मौका है कि वो ये हिस्ट्री अपने नाम, पहला हिस्ट्री अपने नाम कर ले। तो मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा अगर वो इस पे अपने आप पे और भी बिलीव करे, जिस तरह वो अपने आप पर हमेशा बिलीव करती रहती है आ रही है। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया को बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भी है इस हिस्ट्री को बनाने। तो अगर आपके टॉप 4 देखे जाएं तो फिर वो कौन होंगे अजहर भाई? टॉप 4 टीम्स आपके लिए? टॉप 4 में नो डाउट मुझे तो टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड। ये मुझे टॉप 4 में देखने वाली टीम मुझे लग रहा है। अफगानिस्तान? पाकिस्तान की टीम जबरदस्त टीम है, सॉरी तीनों तो एक ही ग्रुप में है। पाकिस्तान की जबरदस्त टीम है नो डाउट, मगर ये है कि पाकिस्तान की जो स्पेशली बॉलिंग है, जबरदस्त बॉलिंग है उसके जबरदस्त कम्बिनेशन बॉलिंग की है मेरे ख्याल में। जिस तरह उसके टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो भी जबरदस्त फॉर्म में। मगर ये कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी ट्रैक है, हम हमेशा पाकिस्तान थोड़ा वहाँ स्ट्रगल करती आ रही है, क्योंकि मैंने जब भी पाकिस्तान टीम को देखा ऑस्ट्रेलिया में तो वो बैटिंग में बहुत स्ट्रगल करती है ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरे ख्याल में मैं क्रिकेट है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकते, हो सकता है पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीत भी जाए, मगर मेरा अपने ओपिनियन ये है कि जो 3-4 टीमें हैं, स्पेशली जो 3 टीमें हैं, जो मुझे इंग्लैंड दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और न्यूजीलैंड, मगर ये कि तीनों एक ही ग्रुप में है। ये मसला है कि से 2 टीम निकलेंगी, 4 तो निकल नहीं सकते। और तीसरा मुझे इंडिया लग रहा है कि वो सेमीफाइनल ये 3 टीमें भी जाएंगी। चौथा टीम वो मुझे नहीं लग रहा है कौन निकलेगा, मगर उसमें मैं श्रीलंका में भी वो कर सकता हूँ, साउथ अफ्रीका में भी कर सकता हूँ कि ये टीम निकल सकती है। ये कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप जो है बहुत डेंजर ग्रुप है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी है, इंग्लैंड भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। एक ही ग्रुप में तीनों टीमें हैं, तो इससे 2 टीम निकलेंगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का चांस होगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले। चलिए, पूछा तो मैंने अफगानिस्तान का था, लेकिन आपने जवाब पाकिस्तान का दे दिया। लेकिन अब अफगानिस्तान का भी बता दीजिए, क्या अफगानिस्तान भी आपको दिखती है टॉप 4 टीम्स में? सॉरी, उस टाइम आपका आवाज थोड़ा सीने में उस तरह वो स्थान नजर आ गया, मैंने कहा पाकिस्तान का आपने पूछ लिया। अफगानिस्तान का जो हॉनेस्टली मैं एक बात बता दूं, जो जिस तरह एक टीम की एक प्रिपरेशन होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई इस वर्ल्ड कप के लिए। मैंने एशिया कप में भी ये बोला था कि अफगानिस्तान टीम को थोड़ा क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो टीम को आगे ले जाए वहाँ पे बड़े मैचेस के लिए, मगर उस तरह वो प्रिपरेशन नहीं हुआ अफगानिस्तान का। तो ये नो डाउट अफगानिस्तान के स्पिनर्स जबरदस्त है, यंग टैलेंट बहुत जबरदस्त है, मगर बैटिंग में हम बहुत स्ट्रगल हमें करना पड़ेगा। हम पता है, मुझे लग रहा है ऐसा कि हम वहाँ स्ट्रगल कर सकते हैं बैटिंग में। बॉलिंग में हम स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, मगर बैटिंग में हम वहाँ स्ट्रगल। ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बाउंसी ट्रैक है, हमारे प्लेयर वहाँ इतने यूज टू नहीं है, क्रिकेट नहीं के लिए ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा। तो इसलिए मैं अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में मुझे मुश्किल लग रहा है ऑनेस्टली। कॉम्बिनेशन बिल्कुल हमारा जो है ना, वो कॉम्बिनेशन मुझे टीम के बिल्कुल नहीं दिख रहा है। Okay, but are you going to ask me the same question, Yashika? Yes, Farooq sir. Well, Asghar has made a very good point about the group things. Very, very good point indeed. But I'm surprised he hasn't mentioned South Africa at all, because South Africa, मेरे ख्याल से छुपे रुस्तम है। छुपा रुस्तम बोलते हैं ना बम्बई हिंदी में, माने they are a very, very dangerous side. Easily capable of beating the best.
I wouldn't be surprised if South Africa even come in the finals. My four would be Australia, England, India, and either South Africa or Pakistan, because Babar Azam or Rizwan, if they, a lot will depend upon their opening stand. If they give Pakistan a good start, Pakistan has got some very, very good bowlers. And Afridi, I think he's a terrific bowler, especially if the cloudy conditions. He's a very, very good swing bowler, very effective. You don't know which Pakistan team will turn up on the day. That's the only problem. Their fielding was atrocious in one of the games that I saw. They were missing straightforward, easy catches, like club cricketers would take those catches. And that fielding might let Pakistan down. But if they improve the fielding, which they should, to international standards, then Pakistan, if they have a good start with Babar Azam is one of the finest batsmen in the whole tournament. He and Rizwan have been consistently getting runs. And if they give Pakistan a good start, Pakistan could be a very, very useful side. They've got some useful strikers, the team. So my four would be Australia, England, India, and South Africa or Pakistan. I wouldn't like to pick one between the two, but this is my combination. ओके चलिए मैच जो है अब 10 मिनट में शुरू ही होने वाला है। असगर भाई, ऑस्ट्रेलिया की आपने बात करी कि ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन टॉकिंग अबाउट ग्लेन मैक्सवेल, जो उनके इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो उन पर इतना बैक करते हैं, अभी हाल फिलहाल में उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए? कितनी बड़ी कमी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए? नो डाउट मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का मेन प्लेयर है, स्पेशली मिड एंड ऑर्डर में बैटिंग के लिए। मेरे ख्याल में मैक्सवेल जो काफ़ी मैचेस खेले, लास्ट मैचेस तकरीबन, तो उसने रन नहीं बनाया मेरे ख्याल में। तो ये उसके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक मौका भी है उसके लिए कि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और तो मेरे ख्याल में मैक्सवेल के जब फॉर्म में आना ऑस्ट्रेलिया के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैक्सवेल फॉर्म में आ जाता है और रन बनाता है, तो ये याद रखे ऑस्ट्रेलिया की जो विनिंग परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अब मैक्सवेल ने इसमें अपने आप बारे में बहुत फिक्र भी किया होगा और बहुत काफ़ी मेहनत भी की होगी उनने। मगर ये बात है कि होम कंडीशन है, आप जब भी होम कंडीशन में होते हो, आपका तकरीबन जो प्रेशर है वो 50% ख़त्म हो जाता है बैटिंग में, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ बॉल किस तरीके से आता है, आपको सब पिचेस का आइडिया होता है। तो मेरे ख्याल में होम कंडीशन है मैक्सवेल के लिए, उसके लिए दिक्कत नहीं होगी अपने आप को फॉर्म में लाने में, और मेरे ख्याल में उसके लिए ईजी भी होगा। अगर वो फॉर्म में आता है तो टीम के लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है, वो होगा। उनका फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सोशल मीडिया पर भी क्या कुछ चल रहा है? मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आज से जो है सुपर 12 के मैचेस शुरू हो रहे हैं, बस कुछ ही देर में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच शुरू होगा। और सोशल मीडिया पर क्या हलचल चल रही है, हम आपको दिखाते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट बैड ट्रिक्स प्रेजेंट सोशल ट्रैकर। चलिए कुछ ट्वीट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं और देखते हैं कि अभी फिलहाल लोग क्या कह रहे हैं। अभिजीत कह रहे हैं, माय प्रेडिक्शन फॉर T20I वर्ल्ड कप फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जीतेंगे और प्लेयर ऑफ द मैच होंगे एरन फिंच। वही जो दूसरा मुकाबला है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच, इंग्लैंड मुकाबला जीतेंगे और मार्कवुड जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच होंगे। असगर भाई, पहले मैच में फिंच प्लेयर ऑफ द मैच, हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एरन फिंच? T20 क्रिकेट में जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, स्पेशल बैट्समैन के लिए जो टॉप 3 के बैट्समैन होंगे ना, वो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मैन ऑफ द मैच आ जाए, स्पेशल बैटिंग में। और ऑलराउंडर्स को बहुत चांस होते हैं कि जो टॉप ऑर्डर में जो खेलते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो ऑटोमेटिक इन लोगों का चांस बहुत होता है, क्योंकि उनके साथ टाइम भी ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा इन लोगों की होती है। तो मेरे ख्याल में जब भी T20 मैचेस होंगे, तो या तो ऑलराउंडर मैन ऑफ द मैच लगे या टॉप ऑर्डर बैट्समैन। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के जो फिंच आज कोशिश भी करे, क्योंकि वो काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म भी है, कोशिश करे कि वो रन्स करे, अपनी मैन ऑफ द मैच पे जो टीम के लिए मैच भी जीते। तो मेरे ख्याल में मैं भी फिंच के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफी वो अक्सर हमेशा न्यूजीलैंड के खिलाफ कोशिश करते कि अच्छा क्रिकेट खेले। ओके, नेक्स्ट ट्वीट पर चलते हैं। फारूक से उस ट्वीट पर रिएक्शन लेते हैं। फर्स्ट मैच ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड व्हेन यू बीइंग वन ऑफ द रीजंस Australia versus New Zealand in Australia, expecting it to be a cracker। ये कहना है क्षितिज का।
फारूक सर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच के लिए इंडिया पाकिस्तान तो कल है ही, जो कि एक बहुत बड़ा मैच है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी एक बड़ी राइवलरी की तरह देखा जाता है, क्योंकि पिछला जो T20 वर्ल्ड कप जरूर। था वहां पर फाइनल मुकाबला इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ था, और अब सुपर 12 में शुरुआत यहाँ से हो रही है। Yeah, there is great rivalry between Australia and New Zealand. Always has been in rugby or cricket or whatever sport. But the host country has never won a World Cup before. But Australia may well put that myth behind them because they are certainly the favorites. Maxwell, we were talking about earlier. For me, he comes as a package. He bats, bowls, fields. Although the speculation is that Finch will be the man of the match or the player of the match, don't be surprised if Maxwell becomes, or Pat Cummins. Pat Cummins, if he bowls, if he takes 3-4 quick wickets and puts Australia in the game straight away, he could be the player of the match. But there is great rivalry, between the two teams, and it's a very interesting question. Yes, indeed, very exciting. New Zealand will be looking forward to giving a good account of themselves. They know that they've got to play shots from ball one, and that might give Pat Cummins, Josh Hazlewood an advantage, because they're not easy to play shots against these two bowlers, in swinging conditions. So I think we got a great match in prospect of us. ओके, चलिए, सोशल ट्रैकर तो हमने देख लिया, लेकिन अब बारी है हमारे पोल की, और पोल में हम देखते हैं कि कितने परसेंट वोट जो है मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को और कितने न्यूजीलैंड को। तो हु डू यू थिंक विल स्टार्ट 2020 वर्ल्ड कप विद अ विन? और ऑस्ट्रेलिया को 54% वोट मिला है और न्यूजीलैंड को 46%। काफी क्लोज है ये असगर भाई, 54 and 46, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोज मैच की उम्मीद करेंगे सब। ये कि मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह मैंने जो कम्बिनेशन दी कि ज़बरदस्त है, और ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि ये इस बार जो है हिस्ट्री अपने नाम कर ले, वो टीम से लग रहा है। मेरे ख्याल में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये 54 की बजाय जो ना 60 कर ले ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे ख्याल में सही रहेगा। Well, I think New Zealand are very fortunate to get such good odds. 46% is quite high. I would have given 75-25, but after Australia winning the toss, I would say Australia were 80-20. But T20 cricket में कुछ भी हो सकता है, T20 World Cup में कुछ भी हो सकता है. If they're off to a flying start, New Zealand, but they're playing against some very, very good opening bowlers, and Pat Cummins and Josh Hazlewood. So that's why I would put Australia as firm favorites, especially after winning the toss and deciding, opting to field. Especially they've got a fantastic bowling attack, and Glenn Maxwell is, hurling in the background. You never know what that guy can turn up. He comes as a package to me. If he doesn't do well in one department, he'll hold some fantastic catches or bowl some. He's not the best off spinner in the world, but he's quite capable of getting wickets if people try and slog him. He uses his head a lot. Dimag se khelta hai. He's a very thinking cricketer, very inventive cricketer, so to say. So I think we got as the person rightly said, we got a cracker in front of us, and let's hope we get some cracking questions from our viewers, because we'd love to answer them to the best of our abilities, Asghar and myself. So go on, ask your questions, and make the show even better than what it is. एब्सोल्युटली, आप जितने भी व्यूअर्स अभी फिलहाल हमें देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप हमें जरूर भेजिए। आप मेंशन कीजिए क्रिक ट्रैकर को, और बैडब्रिक7 हमारा हैशटैग भी जरूर यूज कीजिए। आपको मैं वेदर अपडेट दे देती हूँ। 90% चांस ऑफ रेन टुडे। सो कैसे ये खलल डाल सकता है आज के मैच पे, और कैसे कंडीशंस बदल सकती है असगर भाई अगर बारिश हो जाती है? फिर तो ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त डिसीजन लिया हुआ है कि वो पहले बॉलिंग करे, क्योंकि जब भी बारिश है तो जो पहले बैटिंग करते हैं उसके लिए बहुत दिक्कत आना पड़ती है। ये मसला होता है, जो टॉस जो चेसिंग करते हैं उसके लिए बहुत इजी होता है। अगर आज मैच नहीं होता तो मेरे ख्याल में फैंस काफ़ी नाराज़ होंगे, बहुत काफ़ी मायूस होंगे, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हो जाए।
और क्योंकि उन लोग का मैच हमेशा बहुत ज़बरदस्त रहता है, लोग देखने वाला मैच होता है। तो मेरे ख्याल में बाकी वेदर जो है इंसान के कंट्रोल में नहीं, वो सब अल्लाह के कंट्रोल में है, तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। कभी कभी वेदर बोलता है कि होता है, कभी कभी नहीं होता है, वो चीज़ गलत भी से होता है। मगर ये कि हम ये सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते कि आज बारिश होगा या नहीं होगा। मगर मेरे हिसाब से मैच अगर आज पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा फैंस के लिए भी, और लोग इंजॉय भी करेंगे, और लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं मैच के लिए। बिल्कुल, और सब ये कह रहे हैं कि सारी बारिश जो ऑस्ट्रेलिया में होनी है वो आज ही हो जाए, कल के लिए कुछ भी ना बचे। मतलब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बिल्कुल बारिश ना हो और पूरा मैच हो। लेकिन आज का मैच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। थैंक यू सो मच सर, फारूक सर, असगर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारे व्यूअर्स का भी जो अभी फिलहाल देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि बैटब्रिक 7 पर और क्रिक ट्रैकर हमारे पर जो पूरी कवरेज है वो जारी रहेगी, और हम आएंगे जैसे ही मैच खत्म होगा। आपको यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के भी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। असगर भाई बहुत शुक्रिया, फारूक सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।